Hello friends, welcome back to another video of prepositions. In this video today, I'm going to teach you 4 different prepositions which can actually help you out to speak really good English in your daily life activities. Well, in the last video, as you saw, I had 2 objects, a ball and an apple. But today in this video, I'll use a box and I'll use this key. I'll use these 2 objects to make you understand some very important prepositions that how can you use this practically. So let's get started. Well, first of all, we are going to look the difference between on and onto. Well, you might have studied this a lot of times, but after studying this a lot, there might be a confusion as well that where to put this on and where to put this onto, because both of them are used when something is kept above, when something is kept at a particular height. कुछ height पे अगर कोई चीज़ रखी जाती है उस टाइम पे हम इन्हें यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस, राइट? चलिए समझते हैं इस दोनों ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से. इफ आई वांट टू यूज ऑन कहाँ यूज करेंगे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर स्टेट पोजीशन में रखी जाती है. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टेट पोजीशन में मीन्स उसके रेस्ट पोजीशन में रखी हुई होती है, तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन. इट मीन्स इफ आई एम सेइंग राइट नाउ माई की इज केप्ट ऑन द बॉक्स, माई की इज केप्ट ऑन द बॉक्स. This is clear. But if I say I'm putting this key onto the box, I'm putting this key onto the box, what is the difference? फर्स्ट सेंटेंस में मैंने on यूज किया है और दूसरे सेंटेंस में मैंने onto को यूज किया है. क्या डिफरेंस है? फर्स्ट सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये की जो पोजीशन वो क्या है? स्टेट है. दिस इज फिक्स्ड, राइट? ये अभी रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए हमने ऑन यूज किया है. इन द सेकेंड कंडीशन आई सेड आई एम पुटिंग दिस की onto the box. I'm putting this key onto the box. I'm putting this key onto the box. It means this key right now is not in the rest condition. It is in motion. You see, ये अभी मोशन में है, राइट? ये अभी रेस्ट में नहीं है. जब मैंने बोला मैं अभी इस चाबी को इस बॉक्स के ऊपर रख रहा हूँ, I am putting this key onto this box. I hope this is clear. So when the object is in rest condition, you will say on. When the object is in motion, then you will use onto. I hope this is clear. Now, in the second format, we're going to learn about the uses of in and into. So, for using and to make you understand about these all the things, I have to actually open this up. So, let's open it. Right. It feels like khulja same, right? Okay, by the way, so I'm using this key. For example, that I'm putting this here. I'll say this key is in the box. This key is in the box, right? But if I say I have dropped my key into the box, I have dropped my key into the box, it means in the first condition में जब मैंने की को अंदर रखा था, मैंने कहा I kept my key in the box, और I said this key is in the box. It means कि अभी जो की कंडीशन है, जो की की जो पोजीशन वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है अभी. बट अगर मैं ये कहता हूँ आई एम पुटिंग और आई एम ड्रॉपिंग दिस इनटू द बॉक्स, क्योंकि ये अभी की जो पोजीशन है वो क्या है? मोशन में है, क्योंकि वो गिर रही है ऊपर से, मोशन में है, राइट? सो व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ये ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में होगी हम क्या यूज करेंगे? इनटू. अदरवाइज ये स्टेट कंडीशन में होगी तो हम क्या बोलेंगे? in use करेंगे. I hope this is clear. For better understanding, I would like to give you some more examples. For example, that frog is sitting on the bank of the river. You go there and you suddenly see frog jumped into the river, right? Here I am saying frog jumped into the river. Frog ने जब jump लगाई तो वो क्या हो गया? मोशन में आ गया, right? So frog jumped into the river. It means whenever the object is in the motion, जब object हमारी motion में होगी हम क्या use करेंगे? There we have to use into. Otherwise, in. So now I hope these 4 prepositions would be very clear to you all, and now you also can understand that how to use them in your speaking activities in a proper condition. So now at the last I have a question for you. You have your keys. यही की मान लेते हैं. You have this key and अगर ये की आपकी कुएं में गिर जाती है तो आप क्या यूज करेंगे? in या into? Please do comment down below and let me know what is your answer, in or into. Now at the end, thanks a lot for having such patience. Thank you very much.